ચેનલ ઓફ વડોદરા। અર્કશા ઇન્ટરનેશનલ અને AACCI દ્વારા ઇથિયોપિયા થીમ આધારિત એક ઇવેન્ટનું આયોજન વડોદરા શહેરમાં કરવામાં આવ્યું છે। ઇવેન્ટમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે ઇથિયોપિયાના માનનીય રાજદૂત ઉપસ્થિત રહેશે, ત્યારે કાર્યક્રમનો મુખ્ય હેતુ ભારત અને ઇથિયોપિયાની સંસ્કૃતિ, વેપાર અને રોકાણ તકોને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે। આ કાર્યક્રમમાં વિદેશી પ્રતિનિધિઓ, ઉદ્યોગપતિઓ, નિકાસકારો, આયાતકારો અને સંસ્કૃતિ પ્રેમીઓ ભાગ લેશે। ઇવેન્ટ દરમિયાન દ્વિપક્ષીય વેપાર, રોકાણની તકો પર વિશેષ સેમિનાર થશે। અર્કશા ઇન્ટરનેશનલ અને AACCIએ આ ઇવેન્ટ દ્વારા ભારત અને ઇથિયોપિયાની વચ્ચેના વેપાર અને રોકાણ માટે નવા અવસરો ઊભા કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। આ ઇવેન્ટ ઉદ્યોગ સાથીઓ અને પ્રાયોજકો માટે એક અનોખી તક પૂરી પાડશે, ખાસ કરીને જેમને ઇથિયોપિયાના માર્કેટમાં પ્રવેશ કરવા માંગે છે। You through this exciting event. As we begin this momentous age, unity and pride of our nation, I request all our esteemed dignitaries and to foster the collaboration between our nations. આજે આપણે એક સેમિનાર રાખ્યો છે એશિયન આફ્રિકન ચેમ્બર કોમર્સ ઇન્ડસ્ટ્રી, અક્ષા ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને યોગ્ય પાર્ટનર્સના સહયોગથી આપણે ઇથિયોપિયાથી હિઝ એક્સિલન્સીને બોલાવ્યા છે, જે આપણને અહીંયા ઇથિયોપિયામાં બિઝનેસ કરવા માટેની શું ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે, ત્યાંની કઈ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે શું સ્કોપ છે એના માટે આપણને જણાવશે અને એ આપણને ઇન્વાઇટ કરશે આપણા અહીંના બિઝનેસ એન્ટરપ્રેનર્સને ત્યાં જઈને બિઝનેસ કરવા માટે, અને શું એ લોકો એમની ગવર્મેન્ટ આપણને સપોર્ટ કરશે એના વિશે આપણને બ્રીફમાં માહિતી આપશે। Namaste. Namaste. Thank you very much, the press. We are here from Ethiopian Embassy, and behind me it is Ethiopian government and Ethiopian business people who want to do business with Indian entrepreneurs, and particularly here in Gujarat. I came to know that there are many opportunities to connect between Ethiopia and India. So I'm here to explain what are the potentials that we need in Ethiopia as an investment from India, and particularly from this area. So I'm very grateful for the Asian African Chamber of Commerce and Industry, as well as the local people here, the entrepreneurs who arranged all this. And this is what is the kind of relationship that we want to see in the future. I'm very hopeful today's interaction will get us something for Ethiopia and for India, that we need investment, we need technology, we need resources, we need know-how and knowledge and skills. And India has in abundance. All this is available in India. As Ethiopia is a developing country, we want to connect with Indian business people in everything. So we will see how it unfolds here today. I'm very happy to be here. What's your name? My name is Ambassador Fisaha Shaul, Ambassador to India, in addition to Bangladesh, Sri Lanka, Thailand, and Nepal. Thank you, sir. मैं डॉक्टर GD सिंह, चेयरमैन एशियन अफ्रीकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आज बड़ा उत्साह है क्योंकि इथोपिया के बारे में हम लोग बताने वाले हैं और यहाँ इन्वेस्टर्स हम लोगों ने एकत्रित किया है। बिकॉज देखिए, इथोपिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने के लिए ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हम मार्गदर्शन देना चाहते हैं इन्वेस्टर्स को, बताना चाहते हैं कि आप अफ्रीका में आइए, निश्चिंत होकर आइए, इन्वेस्ट करिए और अपने अपने बिजनेस को आगे लेकर के जाइए। तो बेसिकली एक तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने इसका मंच का उपयोग कर रहे हैं, और एम्बेसडर जो हैं इथोपिया के, उनको हमने दिल्ली से इनवाइट किया है स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए। और आप लोगों को जान के खुशी होगी कि बड़ौदा जैसे शहर के अंदर ये पहली बार हो रहा है। सो एशियन अफ्रीकन चैम्बर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज करने का पीछे का मकसद यही था कि हम लोगों तक मैसेज लेकर के जाएं कि अफ्रीका सेफ़ है और अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज के मंच के उपयोग को हम और अच्छे से लेके जा पाएंगे, बिकॉज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट किसी भी कंट्री को आगे लेके आने के लिए एकमात्र उपाय है। तो भारत में इथोपिया जो भारत कंट्री है, उसमें खास करके भारत में से कितने लोग गए होंगे वहाँ? देखिए, ऐसा है कि हम लास्ट 6 साल से एशियन अफ्रीकन चैम्बर को आगे लेकर के जा रहे हैं,
और इथोपिया के अंदर हम लोगों ने पहले भी इन्वेस्टमेंट कराया है, लेकिन हम लोग दिसंबर के अंदर इथोपिया में 1 हफ्ते के लिए थे। वहाँ हम लोग टूरिज़्म मिनिस्टर को मिले, माइंस मिनिस्टर्स को मिले और उसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स को, और अभी हम एक MOU भी करने जा रहे हैं जो लोकल वहाँ का चैम्बर है, इथोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके साथ में। तो उसके बाद में बेसिकली हम ये चाहते हैं कि जनरल ट्रेड एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो हमारे इंडिया से भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं वहाँ पे, और उसके अलावा मुझे लगता है कि इथोपिया के अंदर सारे मिनरल्स मौजूद हैं। इनफैक्ट हम लोग जो डेली रूटीन के अंदर दालें खाते हैं या हम जो भी चीज़ें हम प्रोक्योर करते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, तो वो भी मटेरियल वहाँ पे है। और मुझे लगता है कि गोल्ड इज़ ऑल्सो इन अबंडेंस देयर। सो गोल्ड माइनिंग की बात करें या अगर हम जिंक की बात करें या हम कोई जनरल ट्रेडिंग की भी बात करें, तो आई थिंक देयर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, कि जहाँ मुझे लगता है कि अब हम लोगों को सिर्फ यही देखना है कि हम वहाँ पे कितना इजीली सेटअप कर सकते हैं और कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव काम कर सकते हैं। तो मकसद यही है कि लोगों को एक राइट डायरेक्शन मिले, बिकॉज़ बिज़नेसमैन जो हैं वो सब जगह पे मौजूद हैं, लेकिन आप ये कहिए कि अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं पता होंगी कि हम वहाँ क्या कर सकते हैं, तो आई थिंक कि हमारे लिए और कुछ सौभाग्य की बात नहीं है। आई थिंक दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज व्हिच आई वुड लाइक टू गिव, दैट people should come forward and they should learn and they should try and see कि नए कंट्री के अंदर नई जगह पे किस तरीके से आप अपने अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। જે આપણે ભેગા થયા છે ઇથિયોપિયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સમિટ માટે, જેમાં આપણા મુખ્ય મહેમાન છે હિઝ એક્સેલન્સી ઓફ ઇથિયોપિયા અલોંગ વિથ ધ ટ્રેડ કમિશનર, અને જે આપણને એક્સપ્લેન કરશે શું ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ અવેલેબલ છે ઇથિયોપિયામાં યંગ ઇન્ડિયન એન્ટરપ્રિન્યોર્સ માટે, અને શું બધી ફેસિલિટીઝ અને ગવર્મેન્ટ સપોર્ટ આપશે. તો જો તમે ઇથિયોપિયામાં બિઝનેસ કરવા માટેની તક શોધતા હોય તો અમે તમને એના માટે હેલ્પ કરી શકીશું.